Hello everyone, welcome to my channel again. So I am back with the last of Nobel Prize, that is Nobel Prize in Economics. तो जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड एट द सेम टाइम लिटरेचर एंड नोबेल पीस प्राइज को कवर किया. नाउ द लास्ट प्राइज इकोनॉमी आई एम कमिंग हियर. This year Nobel Committee has recognized again 3 individuals, right, in the field of economics. We all know that initially the will of the Alfred Nobel only mentioned about medicine, physiology, physics, chemistry, and then literature and peace. But now later on a new area of field of study, research has been added, that is in the field of economics, economic sciences. That's why if you can see that it's given the Sveriges Risk Bank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, and this year 2025 has been awarded to 3 economic researchers or scientists or economists. Half prize has been given to Israeli economist. His name is Joel Mokel. He has got half of the prize, and another half has been split between 2 economic researchers. One is Philippe Aghion. He is from part of UK, United Kingdom, and another half, that is 1/4, has been given to Peter Howitt from USA. So Israel, UK, and US. These are the 3 scientists there. Now, this year Nobel Prize in Economics is very, very significant because it deals with innovation, technological development, and the way innovation, how sustained growth of the society, it deals with that. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इन लोगों का जो रिसर्च है इस बात को बताता है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो वहां पर हमेशा स्टैग्नेशन के बेसिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई है. जैसे कि बिग रिसेशन वगैरह जो है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यूरोप में हुआ तो उससे पहले की बात है, स्टैग्नेशन था, जो बोलते हैं डार्क एज ऑफ यूरोप, और फिर उसके बाद जो ग्रोथ की बात हुई. तो हम जो भी हिस्ट्री में देखते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज स्टैग्नेशन फॉलोड बाय ग्रोथ. लेकिन आप सबको पता है कि मॉडर्न टाइम में आज हम बात करते हैं इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का, न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो इनके जो वर्क है वो पुराने मॉडल को चैलेंज करता है. तो दे चैलेंज द अर्लियर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन स्टैग्नेशन काइंड ऑफ थियरी. दे बिल्ड अ न्यू मॉडल which explain economic growth in a sustainable manner, long term, based on innovation and technological development. That is a very, very landmark what we see in this year's Nobel Prize. Let me just briefly tell you about the part. When you go to the press release of Nobel Committee, it says that here one half to Joel Mokel, another half Philippe Aghion and Peter Howitt. Now, what is said here? They have been given Nobel Prize in Economic Sciences 2025 for having explained innovation-driven economic growth. Now, Joel Mokel, Israeli economist from Northwestern University. He worked in USA. He is based in USA, but he is an Israeli in terms of origin. Now, what is given here? For having identified prerequisite for sustained growth through technological progress. That means he challenged the earlier model of stagnation part. So what it says that over the last 2 centuries, for the first time in history, the world has been seen sustained economic growth, and that's where the scientific technological development has played a crucial role and even playing right now. So what is said here, that large number of people has come out of poverty, right, and their technological advances has been rapidly changing human lives. You know that today nanotechnology, robotics, AI, emergent technology we are talking about, development in biotechnology we are talking about, societal change is there. Now what is said here is this rapidly advancing technology, right, has affected all of us.
the product development, production methods, manufacturing has replaced the old kind of a life cycle or never-ending cycle there. What is it? This is the basis for sustained economic growth, right? Will result in a better standard of life in terms of health and quality of life for people around the globe. But this was not more than 300 years, 200 years back. Quite the opposite, the stagnation was the norm throughout the most of the human history. Despite important discoveries now and again, sometimes led to improved living conditions of higher income, then growth always eventually leveled off in the past. But now things have changed. What Joel Mokyr, he used historical sources, right, to uncover the causes of sustained growth, right, becoming the new normal. So what he demonstrated that if innovation, new ideas, creativity, right, are to succeed one another, right, in a self-generating process, we not only need to know that something work, but we also need to know why something work. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज की बात करते हैं, कोई इकोनॉमिक सस्टेन ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें केवल ये नहीं जानना है कि ऐसा क्यों, मतलब ये ग्रोथ क्या है, बट ऑल्सो जानना है क्यों हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो क्यों हो रहा है, वाई, that part, the latter was often lacking in the previous type of theory of economic growth, where inventions were there, but we are talking about the theory based on not why that innovation is driving that. What was happening, that was being explained in the economic model. It says that the latter was often lacking prior to the industrial revolution. Why was the word why, kyun, was lacking before industrial revolution, but after industrial revolution, technological advancement, why became a buzzword, innovation became a buzzword. He also emphasized importance of society being open to new ideas and allowing changes, which is happening today in 21st century. Now the other two scientists, when you look at here, Philip Aghion and Peter Howitt, they also studied mechanism of sustained growth, but they built a mathematical model on what is something they have given the name in way back in 1992, जब इकोनॉमिक चीजें हो रही थी. इवन इंडिया में पता है 1991 में हमने एलपीजी किया, लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन किया. उस एरा में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, वर्ल्ड ऑर्डर में भी चेंजेस आ रहे थे, तो 1992 में ये दोनों लोगों ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जिसका नाम दिया गया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. तो बोथ Aghion and Howitt, they developed a mathematical model way back in 1992, and they gave the name of the model creative destruction, which we all know that the new technology replaced the old one. जो नए टेक्नोलॉजीज होते हैं, नए इनोवेशंस होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. आज अगर हम बात करें लैपटॉप का, कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का, तो पहले जमाने के जो कंप्यूटर थे अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उसका यूज नहीं होता. अगर हम गाड़ियों की बात करें, आज जो मॉडर्न कार्स, व्हीकल्स है, वो पुराने जमाने के 50-60 साल पहले के जो कार्स होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया. और ये बहुत फास्ट हो रहा है हमारे सोसाइटी में. तो व्हाट दे से दैट what they call a constructed mathematical model called creative destruction. When a new and better product enters the market, the companies selling the older products lose out. जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जो कंपनी पुराने प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उनका लूज आउट हो जाता है. नए प्रोडक्ट मार्केट को, पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है. ठीक है. द इनोवेशन रिप्रेजेंट्स समथिंग न्यू एंड इज दस क्रिएटिव. इनोवेशन कुछ नया होता है, दस क्रिएटिव. इसीलिए आज के टाइम में जो ऐसे कंपनीज है, गूगल, राइट, एप्पल, राइट, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दोज बिग कंपनीज विच आर ड्रिवन विद इनोवेशन. और आज इनोवेशन के कारण नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और पुराने प्रोडक्ट को वो खत्म कर रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज, द इनोवेशन रिप्रेजेंट समथिंग न्यू एंड इज दस क्रिएटिव. However, it is also destructive in nature. Why it is destructive? As the company whose technology becomes passe is out compressed. That means today's time the companies and corporates have to be innovative, have to develop something better, new ideas, new product, new technology to remain in the field of competition in the market. Otherwise, those who are innovative companies will replace them. Consumers, we as a consumers,
will go for some better and new technology product. That is thing. Now in different ways these laureates have created destruction creates conflicts. जब डिस्ट्रक्शन होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी जब रिप्लेस होने लगते हैं नए टेक्नोलॉजी से, ओल्डर प्रोजेक्ट्स जब रिप्लेस होता है मार्केट में नए प्रोडक्ट से, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है, कंपनीज आपस में कम्पीट करते हैं. व्हाट इज सेड हियर कि लॉरेट शो हाउ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इनोवेशन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी मैनेज्ड in a constructive manner. When that conflict created in the market, then this has to manage in a constructive manner, right? Otherwise, innovations will be blocked by established companies and interest groups that risk being put at a disadvantage. बहुत बड़ी बात की है. अगर जब कोई नया टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को पर हावी होता है ना, रिप्लेस करने लगता है, तो उस समय बाजार में मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव वे से मैनेज करना होगा. क्योंकि जो बड़े कंपनीज होंगे जो मान लीजिए कि जो पुरानी चीजों पे बना रहे, जिन्होंने इनोवेशन नहीं किया और उनके प्रोडक्ट आज मार्केट में, और उनके पास क्या है, पावर है मनी का, दे आर वेरी रिसोर्सफुल, और इंटरेस्ट ग्रुप है, वो लॉबी कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, वो लोग मार्केटिंग बेटर कर सकते हैं. तो वो हावी हो जाएगा नए स्टार्टअप पे जो कि इनोवेशन के तौर पे नए प्रोडक्ट को ला रहे हैं. तो कहने का मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट हैं यही बात करें कि जब ऐसे इनोवेशन बाजार में आएगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम विद द न्यू सिस्टम, और इसको कंस्ट्रक्टिव वे से मैनेज करना होगा. नहीं तो क्या होगा, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो पुराने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो नए जो स्टार्टअप जो नए टेक्नोलॉजी को ला रहा है, इनोवेशन को ला रहा है, उसको ब्लॉक कर देगा, वो ग्रो नहीं होने देगा. यानी कि सोसाइटी को अगर प्रोग्रेस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको आगे बढ़ना होगा, इनके इनोवेशन को आगे बढ़ना होगा, मार्केट में जाना होगा, और उसमें जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी इवॉल्व करना होगा ताकि वो भी इनोवेटिव हो, ताकि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको सस्टेनेबली मैनेज किया जाए. बहुत बड़ी बात है ये. The laureate's work shows that economic growth cannot be taken for granted. Economic growth को हम taken for granted नहीं कर सकते. We must uphold the mechanisms that underlie creative destruction. हमें creative destruction को अपनाना होगा कि नए टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म करेगा और उसमें एक नए मॉडल इवॉल्व करेंगे, मार्केट इवॉल्व करेंगे, so that we do not fall back into stagnation. हमें नई चीजों को अपनाएंगे, नहीं तो हम क्या है, पहले स्टैग्नेशन में चले जाएंगे, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा. दैट इज व्हाट सेड दैट वाज द चेयर ऑफ द कमिटी ऑफ द प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, ही नोटेड डाउन. इसीलिए आज गवर्नमेंट, वेदर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइना और जापान और यूएस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और ब्राजील, दे ऑल आर प्रमोटिंग इनोवेशन. और खास तौर के इंडिया में इनोवेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013. हम हर जगह पे इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और इनोवेशन कैन बी ग्रासरूट लेवल. यू कैन बी इनोवेटर, आई कैन बी इनोवेटर, एनी पर्सन विद क्रिएटिव आइडिया थिंकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट कैन बी इनोवेटर. इसके लिए रिकॉग्निशन मिलता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है. इवन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स, राइट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैव टू इवॉल्व विद द न्यू इनोवेशन, राइट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार के नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया और इसके लिए इनको अवार्ड दिए गए. तो अभी जो पहले जो है हाफ, जिनको जोएल मोकेर जो है वो यूएस में है, लेकिन ही इज बेसिकली इजरायली सिटीजन्स. देन फिलिप अगेन इज इन यूके, एंड देन यू नो दैट पीटर होविट दैट इज इन यूएसए. तो इनके बारे में बैकग्राउंड भी आपको पढ़ने को मिलेगा. हाँ, लेकिन ये चीज है कि इस बार जो नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है इकोनॉमिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि इनोवेशन की बात कर रहे हैं. तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस in memory of Alfred Nobel 2025 was awarded for having explained innovation-driven economic growth, with one half to Joel Mocker for having identified the prerequisite for sustained growth through technological progress. And technological progress से sustained economic growth, उसके क्या prerequisite होना चाहिए. And the other half
jointly to Philip Aghion and Peter Howitt for the theory of sustained growth through creative destruction. Right? तो आई होप जो मैंने समझाया है ये आप सबको क्लियरली समझ में आए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि ये यूपीएससी एग्जाम या स्टेट लेवल एग्जाम या उसके लिए जो है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर आपको इनके नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। अगर हम यूपीएससी बात करें तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इनोवेशन, यहाँ पर बात किया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात किया, उस कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू कैन गेट क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स whether UPSC or any other exam. One type is a direct GK question, names of the Nobel laureates who got the award, factual question. And second is that this concept of economic growth with innovation, with technological driven innovation, right, and the creative destruction as a part of economic theory, statement type question you can get in UPSC and other exams. But लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में जुड़े हैं वो केवल स्टूडेंट ही नहीं है, अदर देन स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने चैनल में सभी को वेलकम करता हूं। जितने लोग हैं मेरे चैनल में जो जुड़े हुए हैं, वेदर दे आर स्टूडेंट्स और दे आर जनरल पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कैन गेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। और जो मैं हमेशा कहता हूं, राइट, नॉलेज शुड बी शेयर्ड। सो प्लीज, if you like this content, please like and also subscribe, and at the same time share with your friends and family members so that they get this kind of content and my efforts get rewarded. मैं इसके साथ यहाँ end करता हूँ। With this I end my session here. I will again come back with certain new topics. Thank you everyone, my dear friends. अपना ख्याल रखिए। Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you.